Hello, good afternoon children. This is Shivi ma'am in front of you once more time to bring the video of the proposal. This is the sixth part of the chapter. We will read the chapter from the second last page. And the story have discussed that Natalia and Lomov were knowing that Natalia was thinking and knowing by Chubukov that Lomov has come to propose her. So she is crazy and excited and she was wanting to discuss with him. And he came, but they refused or they forgot to discuss about the marriage proposal, and they stand another topic of dispute, that was of dog. So they were discussing that whose dog is better and best, and so we will start from Lomov's speech, Stepan Stepanovich. So Lomov was calling the father of Natalia and saying, Stepan Stepanovich, I implore you to tell me just one thing. Is your excuser overshot or not? Yes or no? Only you need to give the answer in yes or no. That your dog is better or mine. Means you need to say that his excuser is better or not. Chubukov, and suppose he is. What does it matter? He is the best dog in the district for all that and so on. He is saying, no need to discuss about that matter. Who is supposing that he is not the best? After all, he is the best dog among all the street dogs, and everyone is knowing that your dog is best in the district also. Lomo, what is it my guess better really now? Now he is saying that is it my guess better? क्या मेरा guess अच्छा नहीं है? मेरा guess better नहीं है? Really, you need give it answer. Chubukov, don't excite yourself, my precious one. Allow me, your guess certainly had his good points. He is purebred. He is saying that don't excite yourself means don't be so excited or eager to know about your dog, my precious one. And let me give the explanation about your dog that your guess is good. Certainly it will be good in so many points, but he is purebred. Means he is having the breed as he is having. So he is that kind of breed, firm on his feet and was sprung ribs and all that. He is giving the description about gas and he is saying that he jumps on his foot. So his foot is firm and determined, means strong. And he is also well sprung ribs, means he is having the good ribs through which he can move. He hits himself through the floor. But my dear man, if you want to know the truth, that dog has two defects. He is old and he is short in the muzzle. If you are wanting to know about your guess from me, then let me tell you that your dog is having 2 minus points. The first one is that your dog is too much old, and second one is that your dog is not having so much large mouth. Muzzle is called the muzzle, means that portion of the dogs are called the muzzle. Lomo, excuse me, my heart. Let's take the facts. You will remember that on the Marusinghi's hunt, my guest ran neck and neck with the count's dog, while his accuser was left a whole words behind. Now he is explaining the incident which was happened in that colony, and he is saying that you should excuse me, and he is claiming him as my heart and saying that you need to know more truth about your dog. You will remember that on the Marusinghi's hunt, my guess means they were having the hunt, and they were saying that when we went there for the hunting, then my guess only was there to do the neck to neck, means face to face or point to point or to cover the things. मतलब एकदम से वो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला कर रहा था. एंड ऑन द काउंट्स डॉग मीन्स जितने और दूसरे जो काउंट के डॉग थे उनके साथ में वो बराबरी का मुकाबला कर रहा था. लेकिन
तुम्हारा डॉग जो था वो बीच में ही रुक जाता है, रास्ते को छोड़ देता है। चोको, he got left behind because the count's whisper enraged him with his whip. वो रुक गया क्योंकि काउंट का जो विस्पर था, काउंट का जो आवाज़ विपर था मीन्स कोड़ा, जो उसका हंटर था वो उसकी आवाज़ के कारण से वहाँ पर रुक गया। मीन्स उसने जैसे ही उसको विप किया विपर को, हंटर को, उस तरीके से उसके डर से वो वहाँ रुक गया। Lomo, and with some reason the dogs are running after a fox. When a squealer goes and starts worrying a sheep. With good reason. Oh, that was the reason now. But so what? The dogs are running after a fox. When a squealer goes and starts worrying a sheep. जब ऐसी स्थिति होती है, जब डॉग्स फॉक्स के पीछे दौड़ रहे होते हैं, तब तुम्हारा स्क्यूजर जाता है और एक शीप की चिंता करने लग जाता है। मीन्स उसको शीप से भी डर लगता है। चोको, इट्स नॉट ट्रू माय डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माय टेम्पर। नहीं, ये सही नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। और मुझे ऐसा गुस्सा ना दिलाओ कि जिसके कारण से मैं तुम्हारा ऊपर गुस्सा करूँ, मेरा टेम्पर लूज हो जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, और इसी कारण से मैं चाह रहा हूँ कि तुम यहीं पे बहस करना बंद करो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडीज एल्स डॉग्स। तुमने ही स्टार्ट करा था क्योंकि तुमको ही ऐसा थिंकिंग था कि हर एक व्यक्ति जेलसी करता है और हर एक व्यक्ति दूसरे डॉग्स के लिए भी जेलस है। Yes, we are all like that. You too, sir. हाँ, हम लोग भी उन्हीं जैसे ही हैं. Means we are having the jealousy among us as well as we are having the jealousy for the dogs, rest dogs. Aren't blameless. और ऐसे ही हम लोग भी हैं जो हम blameless नहीं हो सकते. You know, sooner begin with this, that and the other and all that I remember everything. और यही सारी चीज़ें हैं, इसी से ही और ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इस बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी भी और चीज़ें हैं, मुझे हर एक चीज़ याद है। लोमो भी बोलता है, ही इज़ ऑल्सो एग्रीड विद हिम, ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट यस आई ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट थिंग। चोको, टीजिंग हिम, आई रिमेंबर जू, व्हाट डू यू रिमेंबर। उसको परेशान करते हुए बोलता है, तुमको क्या याद है, मुझे याद है। लोमो, माई हार्ट, माई फूड्स गॉन टू स्लीप, आई कांट। लोमो बोलता, ओ क्या हुआ, मीन्स ही इज पल्पिटेटिंग, हिज हार्ट इज पल्पिटेटिंग, ही इज सेइंग दैट मुझे क्या हुआ, मेरा हार्ट को क्या हुआ, मेरा फूड दोबारा से सो रहा है, मैं नहीं बोल सकता। वो बीच में उसकी बात रुक जाती है, फिर नतालिया बोलती है, टीजिंग उसको परेशान करती है, माई हार्ट, क्या हुआ तुम्हारे हार्ट को, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, किस तरीके के तुम हंटर हो जो थोड़ी थोड़ी सी बात पे परेशान हो जाते हो। यू वांट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड चेक ब्लैक बीटल्स, नॉट गो फॉर फॉक्सेस, माई हार्ट। जाओ, तुम तो डरपोक हो, किचन में जाओ, किचन में जाके ब्लैक बीटल्स को और कॉकरोचेस को देखो, सर्च करो किचन में, ओवन के आसपास में। तुम तो जा ही नहीं सकते हो, तुम फॉक्स के पास में कहाँ जाओगे, तुम जंगल में कहाँ जाओगे हंटिंग करने। माई हार्ट, इस तरीके से वो कमेंट करती है। चोको, यस रियली, व्हाट सॉर्ट अ हंटर आर यू एनीवे, यू वांट टू सिट एट होम विद योर पल्पिटेशंस। बोलता है, ओ हाँ सही में, वास्तव में तुम अच्छे एकदम एक्यूरेट हंटर नहीं हो। अच्छा कोई बात नहीं, बट यू शुड गो एट होम एंड यू शुड सिट प्रॉपरली बिकॉज यू आर हैविंग सो मैनी पल्पिटेशन, द हार्ट बीट्स, एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स। तुमको अब जानवरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। You could go hunting, but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on. तुम सिर्फ हंटिंग ही कर सकते हो। किस चीज़ का हंटिंग? आर्ग्यू करने का। मीन्स लोगों की सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे ही तुम आगे बढ़ सकते हो, लोगों के साथ आर्ग्यू करने में और उनके डॉग्स के भी बारे में इंटरफेयर करने में ही। इसी तरीके की बातों में तुमको मन लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, वी शुड चेंज द टॉपिक, वी शुड नॉट टॉक ओवर दिस मैटर बिकॉज I will lose my anger, my temper. Now that's it. This is the main thing, main motive, that you are not the super hunter. Lomo, and are you a hunter? You only go hunting to get in with a count and to intrigue. Oh my heart, you are an intriguer. Now he is saying that you are a hunter. Question mark is there, so he is also asking to him and commenting on him, criticizing him. You also go for the hunting only to count, for the count and only for the cheat. And again he was having the palpitation in his heart and he is again puzzled and sad. Choboko, what? I am insecure, shout, shut up.
He is saying to shut up to him, but he is not shutting up, and he is giving the high temper to Chubukov, and now he is at last shouting on Lomov, and he is saying, shut your mouth, I am not the cheater, I am not the intriguer. Lomov, intriguer, Chubukov, boy, pup. Lomov, old rat, chase it. Chubukov, shut up or I will shoot you like a partridge, you fool. Now they are calling them with other names, with fool, with boy, with intriguer, with rat, with chase it, and he was Chubukov at last saying, shut your mouth, stop talking like this, otherwise I will shoot to you like the partridge. Lomov, everybody knows that, oh my heart, your late wife used to beat you, my feet, temples, sparks, I fall. He is having the breakdown, having the heart falling. Even then he is not stopping his arguments. He is commenting and he is saying that everyone is knowing that you have been beaten by your wife, and late wife were there to beat you, and again he is shouting, my feet, my temples, my head, temples, this kanpati, sparking, shouting, and I fell, मैं गिर रहा हूँ. Chubukov, are you under the slipper of your housekeeper? क्या आप अपने हाउसकीपर के अंदर में हैं? मतलब वो बोल रहा है कि आर यू इन कंट्रोल? There, my heart bursts, my shoulders come off, where is my shoulder? I die, falls into an armchair, I doctor. वो परेशान होता है, बोलता है मैं गया, मेरा शरीर गया, मैं मर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा शोल्डर कहाँ गया, और वो आर्मचेयर पे गिर जाता है, बोलता है डॉक्टर को बुलाओ. Chubukov, boy, milk shop, fool, I am sick, drinks water, sick, oh, क्या हुआ तुमको, बीमार हो रहे हो, क्या हुआ, लो पानी पियो. Natalia, what sort of a hunter are you? You can't even sit on a horse. To her father, Papa, what's the matter with him? Papa, look, Papa, screams Ivan Ivanovich, he is dead. He is shouting, she is shouting, and she is even giving the command to Lomov, and saying that he is dying, and she is commenting that which type of hunter you are, means you are not capable to sit on the horse. Even then you are saying that you are able to hunt. So which kind of sort or which kind of hunter you are? You are not the proper hunter. And she is saying to her father that, father, something is happening, burst, because he is lying down and I think he is died. Chubukov, I am saying I can't breathe air. Now Chubukov also not feeling good, because in his house only Lomov was dying. Natalia, he is dead. Pulls Lomov's sleeve. Ivan Vasilievich, what have you done to me? He is dead. Falls into an armchair. Doctor. Natalia फिर परेशान हो रही है, फिर चिल्ला रही है, उसकी बाਹਾਂ खींचती है, स्लीव खींचती है उसकी, और उसको जगाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, बोलती है तुमने क्या किया, मेरे लिए क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ. Chubukov, oh, what is this? What is it? What is the matter? Natalia wails, he is dead. परेशान हो रहे हैं दोनों लोग, चिल्ला रहे हैं. नतालिया बोल रही है इसको क्या हुआ है, ये मर रहा है. Chubukov, who is dead, looks at Lomov. So he is, my word, water. Doctor lifts a tumbler to Lomov's mouth, drinks this. वो एक टम्बलर उठाता है, ग्लास उठाता है और उसको पानी देता है लोमोव के मुंह की तरह, उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है. बोलता है डॉक्टर को बुलाओ. वो भी परेशान हो रहा, नहीं बोल पा रहा, वो भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा, और वो परेशान होता है. नो, ही डजंट ड्रिंक, वो पानी नहीं पी पा रहा. इट मीन्स ही इज डेड, वो मर गया. एंड ऑल दैट आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, मैं सबसे ज़्यादा अनहैप्पी व्यक्ति हूँ हर एक बीच में. वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन, क्यों मैं अपने आप को गोली नहीं मार लेता हूँ? Why haven't I cut my throat yet? अभी तक मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया? What I am waiting for? What's the matter? And still I am waiting here. Give me a knife. Give me a pistol. Lomov moves. He is shocked and he is wanting to shoot himself. He is wanting to be killed himself, and he is saying that he was wanting to do the suicide. And he moves here and there. He seems to be coming around, drink some water. That's right. He was coming there and he was moving here and there, and he was drinking the water. He was saying to drink the water. Lomov, I see stars, mist, where I am. Lomov is saying, I am moving, means my heart is moving and I am not
able to see anything, I am not here. Chobokov, hurry up and get married and well to the devil with you, she is willing. He puts Lomov's hand into his daughter's. She is willing and all that. I give you my blessing and so on. Only leave me in peace. Hurry up and get married. जल्दी उठो, शादी कर लो. और इस डेविल, ये डेविल तुम्हारा ही है, ये भी चाह रही है तुमसे शादी करना. मतलब खुशी की बात उसको बताती है जिससे वो शादी कर ले और वो उसके साथ में रह सके और वो मरे नहीं, सही हो जाए. He puts Lomov's hand into his daughter's. अपनी बेटी के हाथ में लोमोव का हाथ दे देता है. वो भी देखो, she is willing all that and I give you blessings so on. देखो मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, उठ जाओ, जल्दी से उठो, सही हो जाओ. Only leave me in peace, मुझे शांति से रहने दो. Lomov getting up, what to whom? ओहो, आप सही बोल रहे हैं, किसके साथ, क्या? Chobokov, she is willing, well, kiss and be damned to you. अरे वो राजी है, she is willing, she is happy to get the married with you, kiss and damned to you. In Christian mythology and community, when the kiss was there, kiss was over, then the marriage is supposed to be done. So Natalia wills, he is alive. Yes, I am willing. So she is willing, she is crying and she is happy also, and in happiness she was confessing that she was also willing to do the marriage with him. Chobokov, kiss each other. Lomov, yeah, kiss whom? They kiss very nice. Lomov अभी भी शॉक्ड है, बोलता है किसको मैं किस करूं, और फिर वो लोग किस करते हैं. वेरी नाइस, डू एक्सक्यूज मी, व्हाट्स इज ऑल अबाउट. ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, माय हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी. तो ये सब कुछ क्या हो गया, इतना सरप्राइज भी क्या हुआ, क्या हो गया मुझे, मैं क्यों चक्कर खा रहा हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेरा हृदय को क्या हुआ था. एंड नाउ आई एम हैप्पी. नतालिया स्टिपनोविच kisses her hand, my foot's gone to sleep. उसके हाथ को वो किस करता है और फिर बोल रहा है कि मेरा फिर पैर सो रहा है, नम हो रहा है. Natalia, I am happy too. Chobokov, what a weight off my shoulders. Out. Oh, क्या हुआ मेरे कंधे को. Natalia, but still you will admit now that gas is worse than squeezer. लेकिन अभी तक तुमने एडमिट कर लिया ना कि गैस अच्छा है, ये स्क्वीजर अच्छा है. Lomov, better. Natalia, worse. Well, let's what a start to your family bliss. Have some champagne. चलिए हम लोग अब एक ब्लेसिंग से, एक अच्छी बेस्ट विशेष से स्टार्ट करते हैं, शैम्पेन लेते हैं. और लोमो बोलता है हाँ, ही इज़ बेटर. नतालिया बोलती है वर्स. मतलब अब तो दोनों के हो गए डॉग्स, और दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हुए बोलते हैं, ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, शैम्पेन चिल्लाते हैं कि हमको शैम्पेन लेनी है, चलिए शैम्पेन पीते हैं. सो हियर आई हैव रिटन द एक्सट्रैक्ट. Natalia's speech, Chobokov's speech, Natalia's speech, Chobokov's speech. This is the important speech, and related to this extract, here are the 4 questions. You have to take the screenshot for this, and you may write the answers with the help of this extract. So this chapter now has been finished. I hope that you will learn the explanation properly through my videos. So have a nice day. Best of luck.